Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, imagine this. The great sculptor, Rodin, he finishes a masterpiece, he's excited, brings the students in. First student rushes up, "Wonderful! Master, those hands! I've never seen anything like them." Rodin looks troubled, brings in another student. Same reaction. "Master, only a god can make hands like these, they're alive." Rodin is getting agitated now. Grabs a third student. Again, it's all about the hand. Those hands, they'll make you immortal. Something just snaps in Rodin. He grabs an axe, can you believe it? And chops off the hands. His students are horrified. He cries out, "Fools! I had to destroy them because you only saw the hands, not the whole sculpture." It sounds extreme, right? But it perfectly highlights this need to see the bigger picture, especially when you're starting something new, like maybe a research project. And that story, that idea, is exactly why we're looking today at Insights from the Art of Dramatic Writing by Lajos Egri. It's a classic book, actually first published way back in 1946, but its ideas, still incredibly relevant. We're exploring it today using a pretty comprehensive summary generated by a large language model to get at the core principles. That's right. And Egri's book, it started life as how to write a play, but people quickly saw it was much more than that. There was this famous producer, Gilbert Miller, who said it was the first book that could actually explain why a play failed, before you spent a fortune producing it. He thought Egri wrote like a very wise man with this hard, shining clarity. Basically, he understood life, the good and the bad. And it's had such a long life. It pops up in surprising places. You might even remember Amir Khan, the Bollywood actor and filmmaker. He actually recommended it in his Lamantop interview, which, speaks volumes about its reach beyond just playwrights. So while we're going to pull out the key ideas for you here, we really do encourage you, if you have the time, grab the original book. Honestly, whether you follow our channel or not, it's just a thoughtfully put together piece of work. We'll put a link in the show notes for you. Definitely worth the read. So today, we want to take some of Egri's core concepts and sort of tailor them for you, especially if you're maybe new to academic research. Or perhaps you're just on the verge of starting your own research journey. Think of this as, building your foundation, helping you navigate the complexities ahead with a bit more clarity and purpose, like getting your toolkit ready. The cornerstone, your research premise. Okay, so let's start unpacking this. Egri's first big point is purpose. He says, every sensible invention must have a purpose. Every planned sprint to destination. Makes sense. He warns that without a clear premise, you could just write endlessly, miles of writing, but it wouldn't actually mean anything. For him, the premise is like a tiny summary, a thumbnail synopsis of the whole piece. Exactly. And the connection to research is, it's incredibly direct. Think of your research project like Egri thinks of a play. Your premise isn't just your topic area like climate change. No, it's your central argument, your specific hypothesis, maybe your main research question. It has to be a clear statement of what you're setting out to prove or explore. He uses examples like great love defies even death. That's Romeo and Juliet's premise. Or ruthless ambition leads to its own destruction for Macbeth. And crucially, he says, an unclear premise is as bad as no premise at all. It has to be sharp. That's a really key point. So for someone doing research, it means before you even start outlining chapter 1, you need to be able to state really clearly what you're trying to demonstrate. Don't just start with AI. That's too broad. Narrow it down. Make it provable. Something like the integration of AI in healthcare leads to a measurable reduction in diagnostic errors within the first year of implementation. See? Specific, testable. Right. Or even simpler, maybe you're looking at social media. Your premise isn't just it affects teens. It's more like daily use of Instagram by 14 to 16-year-olds correlates with a significant rise in self-reported anxiety over 6 months. That gives you a clear target. Egri does say you might start with just an idea or a character or an incident. Oh, okay. But the absolutely vital thing is to find that premise eventually. It has to crystallize. Okay, that makes sense. But what if you feel like you have a couple of important questions you want to tackle? Can you have more than one premise? Good question. Egri is pretty emphatic here. His answer is basically no. He says, a play with more than one premise is necessarily confused. He points to examples like the Philadelphia story, which he felt had several weak competing premises. For research, it's the same danger. If you're juggling totally unrelated questions, the whole project can feel scattered, lose its punch. So focus is key. Absolutely. It's not about limiting yourself, but ensuring clarity. Even if your work crosses disciplines, you usually can find one core, overarching premise that ties the different threads together. That gives your investigation a strong narrative drive. 2, deconstructing your subject, the 3 dimensions of character.
All right, so once you have that clear premise, that purpose, Egri takes us deeper into understanding the subject itself. He talks about character not just superficially, but in these three dimensions: physiology, sociology, and psychology. He even quotes Ibsen, the playwright, who said he had to really know his characters, like meeting someone on a train journey and then living with them for a month just to grasp all their little quirks. Yeah, it's about intimate understanding. And for you, the researcher, your character, is whatever you're studying. It could be a social movement, a chemical reaction, a historical figure, even an abstract idea like justice. You need to understand its bone structure, as Egri puts it. So, physiology, that's its basic nature, its physical properties, how it fundamentally works. Then sociology, that's its environment, its context, all the external forces acting on it, like did it grow up in a basement or a mansion, metaphorically speaking? Yeah. And psychology, that's its internal dynamics, its behaviors, its reactions. And importantly, this is shaped by the other two. It's not just what something is. You have to ask why it is that way and why it's always changing, whether he wishes it or no. So let's take an example. Maybe you're researching the spread of online misinformation. The physiology could be things like how social media algorithms work, right, or the tech itself. Exactly, the underlying mechanics. That the sociology would be maybe the echo chambers people get into. Political polarization, cultural factors. Precisely, the context it thrives in. And the psychology, that'd be about why people fall for it. Cognitive biases, confirmation bias, that sort of thing. You've got it. Understanding all three layers means you can tackle the problem more effectively, getting at the root causes, not just slapping on a Band-Aid. Egri really stresses this interconnectedness too. He says, everything in existence is closely related to everything else. You cannot treat any subject as though it were isolated. It's holistic. He even breaks down something like happiness into its parts: health, work, love, hope, and shows how changing just one part changes the whole picture. And this connects to a fundamental idea, a dialectical one. Constant change is the very essence of all existence. Everything, eventually, passes into its opposite. Even a rock changes over millennia. So your research subject isn't static? Not at all. It's dynamic, evolving, shaped by internal forces and external pressures. If you just take a snapshot in time, your understanding is incomplete, maybe even wrong. 3. The drive of inquiry. Conflict and unity of opposites. Okay, so if everything's changing and interconnected, how does that drive the actual work? Where does the energy come from? Egri talks about conflict. He calls it the heartbeat of all writing. Not just random fighting, but a real clash between opposing forces or ideas. Right. And for your research, that conflict is the central problem you're addressing. It could be the clash between two competing theories in your field, or maybe contradictory results in the existing data, or just a big unanswered question. Egri uses this term, unity of opposites. It means things that seem opposed are actually bound together, and that creates tension. He gives an example from a play, Brass Ankle, where a character's deep prejudice slams up against the truth of his own family history. That creates what Egri calls aggravated conflict. Often the real depth of a research problem lies in uncovering these kinds of inherent contradictions or tensions. That's interesting. Because in research, sometimes it feels like the goal is to smooth over conflict, find the consensus view. Is Egri saying we should embrace the conflict instead? Well, yes and no. It's a great point. He's not saying you should just stir up arguments for the sake of it. The conflict, he means, is the inherent tension that motivates the research in the first place. It's the gap in knowledge, the friction between ideas, the challenge posed by a problem. That's the engine. He warns that a weak character cannot carry the burden of protracted conflict. A weak premise or a trivial problem won't sustain serious investigation. Okay. So you need to choose a research problem that has enough substance, enough genuine tension or unanswered questions to really fuel a rigorous exploration. And he says, the stronger this unity of opposites, the clearer the opposing forces are, the more likely your data, your arguments, your characters will actually lead you to proving your premise. Exactly. If your research question is well-defined and the tensions within it are strong and clear, your investigation naturally gains direction and purpose. It points towards compelling conclusion. It shapes your whole approach. 4. The journey of knowledge. Transition and point of attack. All right, let's talk about how the research journey itself unfolds. Egri makes a point about nature not jumping from winter straight to summer. There's spring in between. He argues plays shouldn't jump either. They need transition. He says this gradual change, transition works everywhere, building things up, breaking things down. Even our own thoughts and feelings change through these tiny shifts. This is so critical for research writing and thinking. Absolutely vital.
Every single step in your argument, every shift in analysis, every connection you make between evidence and claim, it needs a clear, logical transition. If your reasoning suddenly leaps, without explaining the steps, it creates what Egri calls a jumping conflict for your reader. Or, importantly, for a peer reviewer. Yeah, I can see that. A good playwright, he says, tracks the minute movements of the mind like a seismograph tracks earth tremors. For you, that means being meticulous. Detail your methods, explain your analysis step by step, show the logical flow of your ideas, no unexplained jumps. That really resonates. It's like when you're writing a grant proposal. Maybe you think you've made this brilliant connection, but the reviewer just sees a gap, a jump, and they question the whole thing. Egri's point on transition really hits home there. It does. And what about where to begin the research story, the starting point? Egri calls this the point of attack. He says a play should start when something significant is happening, when at least one character has reached a turning point. There has to be something at stake. Like Macbeth, starting right when he gets the prophecy and starts thinking about being king, or that play Bury the Dead, starting when dead soldiers refuse burial, huge stakes there. So the question becomes, what's truly at stake in your research? Why does it matter now? The best research doesn't just add another fact to the pile. It addresses something critical, a turning point, a pressing problem, a major challenge. Your main research question should represent that turning point. It should create a sense of necessity for the work that follows. It drives the whole investigation. It's not just about, time to start the lit review. It's identifying that specific, urgent, unanswered question that makes your research feel, essential. Like maybe there's a new policy creating unforeseen problems, or a discovery challenging old assumptions. Exactly. That urgency, that's your point of attack. V, the discipline of brilliance, genius in research. This leads us to a final, really interesting insight from Egri about genius. And it's actually quite encouraging, I think. He doesn't see genius as some kind of, mystical gift you're born with. He calls it a transcendent capacity for taking trouble, first of all. Okay. He even points out that sometimes mediocre men outstrip geniuses who are too lazy to actually put in the work. Yeah, it demystifies it a bit, doesn't it? And connecting that to your research journey, it means that, being smart helps. Yeah. It's really that infinite capacity for focused, persistent effort, for deep, dedicated study that makes the biggest difference. That's what distinguishes truly impactful researchers. It's easy to look at major breakthroughs and feel like they came from some untouchable talent. Definitely. But Egri reminds us it's often about the grind, the relentless, methodical work. That quiet perseverance, especially when things get tough, that's where the magic often happens. He advises, experiment as you choose, but within the laws of nature. Breakthroughs don't happen in a vacuum. They push boundaries within the existing framework through hard work and deep understanding. Just like stars form according to physical laws, research breakthroughs come from diligently working with the elements of your field. It's a really powerful message, I think, that success is tied so closely to dedication. Egri told writers to write something you really believe in and create characters driven by real-world necessity. For a researcher, that translates to choosing something you're genuinely passionate about, right? Yeah. And understanding the real problem, the necessity your work is trying to solve. Absolutely. That passion is what fuels the persistence you need. Outro. So as we wrap up our exploration here, just remember that these ideas from Lajos Egri, even though they were originally for playwrights, they offer such a valuable framework for thinking about academic work. Whether you're writing a thesis, designing an experiment, analyzing data, these principles, a clear premise, understanding your subject in 3D, harnessing conflict, ensuring smooth transitions, finding that urgent point of attack, they're like your guiding stars, your essential toolkit. Indeed they are. And Egri reminds us that the process, the technique, it mirrors universal laws, which governs an atom or a constellation above us. Your research, in its own way, reflects these patterns of connection and change. He uses this analogy of a termite family. Each one is an individual, yes, but still only part of the whole. Your specific research project is like that individual termite. It contributes to the larger colony of knowledge, influencing it and being influenced by it. By applying these ideas, you're doing more than just research. You're crafting a compelling story of discovery, hopefully revealing some truth, maybe even sparking new questions for others. So what's the takeaway for you as you embark on or continue your research? It's about seeing your work not just as collecting data points, but as understanding a living system, where every piece, every connection, every driving force really matters. We hope your own research journeys are filled with clarity, insight, and that deep satisfaction that comes from uncovering something meaningful. And maybe a final thought to leave you with, building on Egri.
If he's right that every living creature is capable of doing anything, if the conditions around him are strong enough, then what unexamined conditions might exist in your own field right now? Conditions that, if understood, could lead to some truly unexpected discoveries. Something to ponder. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা। আর আমি পাভলভ। আচ্ছা, বিখ্যাত ভাস্কর রোন্দেয়ার একটা গল্প আছে না, মানে দারুণ একটা মূর্তি বানিয়েছিলেন উনি। হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, যেটার হাত দুটো এত সুন্দর হয়েছিল যে ঠিক, সবাই শুধু হাতটারই প্রশংসা করছিল, আর উনি রেগে গিয়ে কি করলেন, কুঠার দিয়ে কেটে ফেললেন হাত দুটো। ভাবা যায়, কারণ ওনার কাছে পুরো সৃষ্টিটাই আসল ছিল, শুধু একটা অংশ নয়। একদম। আর এই ভাবনাটা কিন্তু মানে আজকের আলোচনার জন্য খুব জরুরি, অংশের চেয়ে পুরোটাকে বোঝা। ঠিক তাই। আর এই দর্শনটাই যেন লাজোস এগ্রিরি দ্য আর্ট অফ ড্রামাটিক রাইটিং বইটার মূল কথা। 1946 সালে বেরিয়েছিল বইটা। যদিও এর একটা আগে সংস্করণও ছিল, তাই না, 1942 সালে। হ্যাঁ, হাউ টু রাইট আ প্লে নামে। এগ্রি নিজে তো হাঙ্গেরিয়ান নাট্যকার ছিলেন, শিক্ষকও ছিলেন, নাটক লেখার ভাবনা চিন্তায় ওনার বিরাট অবদান। আর বইটা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝা যায় যখন দেখি আমির খানের মতো মানুষও মানে লল্লন টপের ইন্টারভিউতে এই বইটার কথা বলছেন। অবশ্যই। তবে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, অ্যাগরির এই গভীর ভাবনাগুলো সহজভাবে আলোচনা করার জন্য আমরা কিন্তু আজকে একটা বৃহৎ ভাষা মডেল মানে এলএলএম-এর তৈরি করার সারাংশের সাহায্য নিচ্ছি। হ্যাঁ, দেখা যাক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এই ক্লাসিক কাজটাকে কিভাবে আমাদের সামনে আনে। অ্যাগরির এই বইটা কিন্তু শুধু নাটক লেখার টেকনিক শেখায় না, মানে যে কোনো লেখা, রিসার্চ, সেগুলোর কাঠামো বুঝতেও খুব সাহায্য করে। বিশেষ করে যারা ধরুন সবে রিসার্চের জগতে আসছেন বা কোনো বিষয়কে কিভাবে খুঁটিয়ে দেখতে হয় সেটা শিখতে চাইছেন। একদম, তাদের জন্য অ্যাগরির এই পদ্ধতিটা দারুণ কাজে আসতে পারে। অ্যাগরি তো প্রথমেই জোর দিচ্ছেন ক্রেমাইজ বা প্রেপোজিশনের উপর, মানে মূল ধারণা বা উদ্দেশ্যটা। হ্যাঁ, উনি বলছেন যে কোনো ভালো কাজের একটা স্পষ্ট লক্ষ্য থাকতেই হবে, না হলে পুরো ব্যাপারটা মানে উদ্দেশ্যহীন হয়ে যায়। যেমন একজন ইঞ্জিনিয়ার জানেন তিনি কি বানাচ্ছেন, বা একজন দৌড়বিদ জানেন কোথায় পৌঁছতে হবে। ঠিক, এই প্রেপোজিশন বা মূল আইডিয়াটাই ঠিক করে দেয় কাজটা কোন দিকে যাবে, কোথায় শেষ হবে। শুরুতে এই আইডিয়াটা ঠিক করাটা এত জরুরি কেন? জরুরি কারণ এটাই তো ফাউন্ডেশন। ধরুন রোমিও আর জুলিয়েট, এগ্রি উদাহরণ দেন, সেটার প্রাপ্তাস্থলী কি? প্রকৃত ভালোবাসা মৃত্যুকেও হার মানায়। এই আইডিয়াটাই পুরো নাটকটাকে চালিয়ে নিয়ে গেছে। রিসার্চের ক্ষেত্রেও তাহলে একই, একটা স্পষ্ট প্রশ্ন বা লক্ষ্য। অবশ্যই, সেটা শুরুতে ঠিক না করলে রিসার্চটা ছড়িয়ে যেতে পারে। আর এগ্রি এটাও বলেন যে লিখছে বা রিসার্চ করছে তাকে নিজের ওই মূল আইডিয়াটায় বিশ্বাস করতে হবে মন থেকে। বিশ্বাসটা জরুরি। আচ্ছা, এরপর এগ্রি গুরুত্ব দিচ্ছেন ক্যারেক্টার বা চরিত্রের ওপর। নাটকের চরিত্র বোঝা আর রিসার্চের বিষয়বস্তু বোঝা কি একরকম? এগ্রি যেভাবে বলছেন তাতে বেশ মিল আছে। উনি বলছেন চরিত্র বা বিষয়কে শুধু পৃষ্ঠপোষক দেখলে হবে না, গভীরে যেতে হবে। এর জন্য উনি একটা ত্রিমাত্রিক কাঠামোর কথা বলছেন। 3টে মাত্রা কি কি সেগুলো? প্রথমটা হলো শারীরবৃত্তি বা ফিজিওলজি, মানে শারীরিক গঠন, স্বাস্থ্য, বয়স, লিঙ্গ এইসব। দ্বিতীয়টা সমাজতত্ত্ব বা সোশিওলজি, মানে তার পরিবেশ, বেড়ে ওঠা, ক্লাস, ইকোনমিক কন্ডিশন, শিক্ষা, ধর্ম। আচ্ছা, মানে তার সামাজিক প্রেক্ষাপটটা। হ্যাঁ, আর তৃতীয়টা হলো মনস্তত্ত্ব বা সাইকোলজি, মানে তার ভেতরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, হতাশা, ভয়, মানসিক গঠন, যেগুলো আসলে প্রথম দুটো মাত্রা থেকেই তৈরি হয়। তার মানে একটা মানুষকে বা বিষয়কে বুঝতে হলে তার শরীর, সমাজ আর মন এই 3টে দিকই দেখতে হবে রিসার্চের ক্ষেত্রেও। একদম। ধরুন আপনি কোনো সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন, তার বাস্তব দিকটা শারীরবৃত্তি, তার ঐতিহাসিক বা পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট সমাজতত্ত্ব, আর মানুষের ওপর বা সিস্টেমের ওপর তার প্রভাব মনস্তত্ত্ব, এই সবটা না দেখলে পুরো ছবিটা পাওয়া মুশকিল। বাহ, এটা তো দারুণ একটা ফ্রেমওয়ার্ক। তাহলে প্রথমে একটা স্পষ্ট লক্ষ্য মানে প্রেপোসি, তারপর বিষয়টার এই 3 দিক থেকে বিশ্লেষণ, এরপর
এরপর আসছে কনফ্লিক্ট বা দ্বন্দ্ব, আর তার মধ্যে দিয়ে গ্রোথ বা বিকাশ। এগরি মনে করেন দ্বন্দ্ব ছাড়া জীবন নেই, গতি নেই, প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই তার উল্টোটা থাকে, আর এই সংঘাত থেকেই পরিবর্তন আসে। তার মানে কোনো চরিত্র বা বিষয় একই রকম থাকবে না, বদলাবে। বদলাতেই হবে। স্থির চরিত্র বা বিষয় মানেই সেটা দুর্বল কাজ। পরিবেশ, পরিস্থিতি, ভেতরের আর বাইরের চাপ, এসবের সঙ্গে লড়াইতে চরিত্রটা বিকশিত হয় বা বিষয়টা নতুন দিক বেরিয়ে আসে। একটা উদাহরণ দিলে ভালো হয়। যেমন ধরুন ইবসেনের আ ডলস হাউসের নোরা। নাটকের শুরুতে সে কেমন ছিল? স্বামীর খেলার পুতুল। কিন্তু নাটকের ভেতরের দ্বন্দ্বগুলো, মানে ঘটনাগুলো, হ্যাঁ, তাকে একদম বদলে দেয়। শেষে সে নিজের পরিচয় বেরিয়ে আসে। ঠিক এই বিকাশটাই আসল। এগরি বলেন শক্তিশালী চরিত্র বা বিষয় দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে, আবার দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই সে আরও পোক্ত হয় বা পরিবর্তিত হয়। তাহলে যারা নতুন রিসার্চার, তাদের জন্য মূল সূত্রগুলো কি দাঁড়ালো সংক্ষেপে যদি বলি? বলতে গেলে 3টে জিনিস। 1, শুরুতেই একটা খুব পরিষ্কার আর বিশ্বাসযোগ্য লক্ষ্য বা প্রেপোজিশনস ঠিক করা। 2, বিষয়টাকে ওই শারীরবৃত্তীয়, সমাজতাত্ত্বিক আর মনস্তাত্ত্বিক এই 3 দিক থেকে খুব খুঁটিয়ে দেখা। আর 3 নম্বর? আর 3 নম্বর হলো দেখানো যে কিভাবে দ্বন্দ্ব বা চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে বিষয়টার পরিবর্তন বা বিকাশ হচ্ছে। এই জার্নিটা দেখাতে পারাটাই আসল। চমৎকার। লাজোস এগুরির দ্য আর্ট অফ ড্রামাটিক রাইটিং বইটা তাহলে সত্যিই খুব কাজের। আর এটা যে শুধু নাটক লেখার জন্য নয়, সেটা বোঝা গেল। একেবারে যে কোনো বিশ্লেষণাত্মক কাজের জন্যই এটা একটা অসাধারণ গাইড। আমাদের শ্রোতাদের বলবো, আপনারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, প্লিজ এই বইটা জোগাড় করে পড়বেন, বিশেষ করে যারা লেখালেখি বা রিসার্চ করেন। আমরা লিঙ্কটা শো নোটসে দিয়ে রাখব। আর শেষ করার আগে একটা ছোট্ট ভাবনা। এই যে প্রেপোজিশনস, চরিত্র বিশ্লেষণ, দ্বন্দ্ব আর বিকাশের ধারণা, এগুলো কি শুধু নাটক বা রিসার্চের ফর্মুলা, নাকি জীবনের যে কোনো সমস্যা বুঝতে বা তার সমাধান খুঁজতেও একইভাবে কাজে লাগতে পারে? বাবার মতো প্রশ্ন কিন্তু। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। एक महान मूर्तिकार थे रोडिन। उन्होंने एक बार अपनी ही बनाई एक मूर्ति के हाथ तोड़ दिए। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि लोग बस उन हाथों की तारीफ किए जा रहे थे। पूरी मूर्ति, उसका जो असल मतलब था, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं था। अच्छा, ये किस्सा तो नाटक लेखन के लिए एकदम सटीक बैठता है। मतलब पूरी तस्वीर देखना जरूरी है। बिल्कुल। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो इसी से जुड़ा है। ये चर्चा असल में एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM का विश्लेषण है। हाँ, एक पुराने मगर बहुत प्रभावशाली किताब पर आधारित है। ये 1946 में छपी थी। सही। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग और इसके लेखक हैं लाजोस एग्री। नाटक लेखन में उनका काम बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि आमिर खान ने भी ललन टॉप वाले इंटरव्यू में इसी किताब का जिक्र किया था, सिफारिश की थी। हाँ, मैंने भी सुना था वो। तो देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, पर इस किताब के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। सच में बहुत गहराई से और बड़े सलीके से लिखी गई है। इसका लिंक हमने शो नोट्स में डाल दिया है। और हाँ, ये चर्चा शायद उन लोगों के लिए खास तौर पर काम की हो सकती है जो अभी रिसर्च वगैरह में नए हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जैसे रिसर्च में अपने विचारों को एक ढांचा देना होता है, किसी विषय की तह तक जाना होता है। हाँ। इस किताब के सिद्धांत उसमें मदद कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ से शुरू करें? इसके मुख्य विचारों से? हाँ, एग्री का सबसे अहम विचार है आधार वाक्य, प्रेमिस जिसे कहते हैं। आधार वाक्य। हाँ। ये किसी कहानी या नाटक का वो केंद्रीय विचार है, वो मकसद जिसे लेखक साबित करना चाहता है। जैसे मान लीजिए मैकबेथ का आधार वाक्य है कि क्रूर महत्वाकांक्षा खुद को ही खत्म कर देती है। बिल्कुल। या रोमियो जूलियट का कि सच्चा प्यार मौत को भी हरा सकता है। ये कहानी को एक दिशा देता है, एक मकसद। और ये चीज रिसर्च से कैसे जुड़ती है, ये दिलचस्प है। हाँ, एक साफ आधार वाक्य काफी हद तक एक अच्छे रिसर्च प्रश्न या हाइपोथेसिस जैसा है। अच्छा, मतलब ये रिसर्च को रास्ता दिखाता है, फोकस बनाए रखता है। एकदम। ये बताता है कि रिसर्चर ढूंढ क्या रहा है, साबित क्या करना चाहता है। इसके बिना कहानी भी भटक सकती है,
और रिसर्च भी। हाँ, दिशाहीन हो सकता है। लेकिन एक सवाल है, पूछिए। क्या रिसर्च में हमेशा शुरू से ही इतना साफ आधार वाक्य होता है? कई बार तो लगता है कि खोजते खोजते ही चीजें साफ होती हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। जरूरी नहीं कि सब कुछ शुरू में ही शीशे की तरह साफ हो। हाँ। कई बार रिसर्च करते हुए ही परिकल्पना ज्यादा मजबूत होती है, विकसित होती है। हाँ। पर एग्री का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि एक दिशा होनी चाहिए, भले ही शुरू में थोड़ी धुंधली क्यों ना हो। हाँ, फोकस रखने के लिए वो जरूरी है। ये बात समझ आई। तो आधार वाक्य के बाद अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? पात्र, कैरेक्टर। एग्री कहते हैं कि पात्र ही कहानी का इंजन है, वही कहानी को चलाते हैं। इंजन। अच्छा। और पात्रों को गहराई से समझने के लिए उनके 3 पहलू जानना जरूरी हैं। शारीरिक यानी फिजियोलॉजी, ठीक। सामाजिक यानी सोशियोलॉजी, और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी। पात्र की सेहत, समाज में उसकी जगह, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, ये सब उसके एक्शन को तय करता है। हाँ बिल्कुल, उसके फैसलों को प्रभावित करता है। पात्रों के ये 3 आयाम, मतलब फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनको समझना ही तो कह सकते हैं असली काम है, चाहे कहानी हो या रिसर्च। हाँ, और वो मनोवैज्ञानिक पहलू पकड़ना मुश्किल होता होगा ना। और एग्री ये भी कहते हैं कि पात्र बदलते हैं। सही कहा, वो स्थिर नहीं रहते। संघर्ष के जरिए वो बदलते हैं, विकसित होते हैं। इसे एग्री कहते हैं द्वंद्वात्मक विकास, डायलेक्टिकल ग्रोथ। हाँ, और यहीं पर तीसरा सिद्धांत आ जाता है, संघर्ष और विकास, कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्रोथ। बिल्कुल। संघर्ष तब होता है जब पात्र का लक्ष्य और आधार वाक्य के बीच या 2 पात्रों के बीच टकराव होता है, और यही टकराव कहानी को आगे धकेलता है, पात्रों को बदलने पर मजबूर करता है। हाँ, अग्री। इसी पर जोर देते हैं कि पात्रों में बदलाव दिखना चाहिए, विकास दिखना चाहिए। यहाँ वो द्वंद्ववाद यानी डायलेक्टिक्स का सिद्धांत काम आता है, अगर आसान शब्दों में कहें तो। हाँ, बताइए। एक विचार होता है थीसिस, ठीक। फिर उसका विरोधी विचार आता है एंटीथीसिस, अच्छा। और इन दोनों के टकराव से एक नई बेहतर समझ बनती है, सिंथेसिस। अच्छा, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। हाँ, अब इसे रिसर्च से जोड़ें। ठीक। मान लीजिए आपका पहला विचार थीसिस है कि ऑनलाइन पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं जितनी क्लासरूम वाली। ठीक। फिर आपको कुछ डेटा मिलता है जो कहता है कि नहीं, कुछ मामलों में ऑनलाइन ज्यादा फायदेमंद है। एंटीथीसिस। तो इन दोनों विरोधी बातों को मिला के आप एक ज्यादा संतुलित नतीजे, सिंथेसिस पर पहुंचते हैं कि असर किस पर निर्भर करता है, मतलब संदर्भ पर। तो चुनौतियां, विरोधी नतीजे, यही हमें गहराई तक ले जाते हैं। बिल्कुल, संघर्ष और उसका हल ही विकास लाता है। तो मतलब एग्री कि ये किताब सिर्फ नाटक लिखना नहीं सिखाती? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिखाती है कि विचारों को कैसे संजोएं, किसी भी तर्क के मूल तत्व कैसे समझें। सही कहा, ये असरदार तरीके से सोचने और अपनी बात रखने की कला है, जो रिसर्च करने वालों के लिए तो बहुत ही कीमती है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो कर रहे हैं उसका असली मकसद क्या है। हाँ, और इसी सोच के साथ एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। एग्री कहते हैं हर कहानी का एक आधार वाक्य होता है। तो जरा सोचिए, आपकी अपनी रिसर्च यात्रा या शायद आपकी जिंदगी का वो कौन सा अनकहा आधार वाक्य है जिसे आप अनजाने में साबित करने या जीने की कोशिश कर रहे हैं।